Hello everyone, welcome to APTI PLUS Academy for Civil Services. This is a special video on the FCA Fortnight Current Affairs, and in this initiatives I'll be covering the top 10 news comprehensively, and these news coverage is again very important for your prelims and mains examination. So this FCA is Fortnight 2 for the February, and the coverage of the entire news is from the Hindu, Indian Express and the Press Information Bureau. So before I start the session, let's just look upon the list of the topic that we'll be discussing. So these are the list of the topic of the day. You can pause this video and you can read the entire topic. The first being the Carbon Watch app, Sanders instant messaging app, Mission Indradhanush 3.0 and Corruption Perception Index 2020. So these are some of the important topic that was there in the entire fortnight, right? So I'll be discussing each topic one by one, and make sure that you give adherence to each topic so that it can, if a question is being framed, you can easily answer that questions. So with the first news, that is Carbon Watch app. This has become a topic and very relevant for the prelims examination as well. So what is Carbon Watch app? So this app was being released by Chandigarh. This has become the first union territories of India to launch the Carbon Watch app. और ये जो ऐप है, this would be basically assessing the carbon footprint of an individual. So they would be more focusing on the individual, how the level, the excess of carbon footprint is there in terms of each and every individuals. Now, what about this app? How this app is going to work? What is the focus of this app? So the app would focus on individual actions and calculations on the footprint on the basis of transport energy, waste and water consumption. So ये तीन important parameters है, basis of transport, energy, waste and water consumptions. और ये जो ऐप है, ये एक इस तरह के informations भी देगी. It will provide the information in such that the nation and world's average emission and the individual level of emission, how much it's generated, that we can track via app. So this is again a very significant app. This app also encourages people to have a climate smart citizen, right? तो अगर आप ethics पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज पेपर 4 में with regards to the climate ethics, then you can quote this type of things, right? These initiatives can be taken. So this encourages the people for the climate smart citizen, and it will make them capable of assessing the carbon footprint along with providing them with the steps to reduce it. और कैसे वो क्या क्या लेवल पे emissions हो रही हैं और क्या steps लिए जाने चाहिए जिनसे उनको reductions भी उनको reduce किया जा सकता है, pollutions को reduce किया जा सकता है, right? Now, what is carbon footprint? As we are discussing this app, it is equally important कि आप carbon footprint के बारे में भी जाने. So according to WHO, the carbon footprint is a measure of impact people activities have the amount of the carbon dioxide, right? तो कितना जो human activities के जो impact है या जो उनके खास करके जिस तरह के activities में वो involve है उसमें carbon dioxide का productions कितना ज़्यादा हो रहा है, that include burning of fuels expressed as a weight on the CO2 emission produced per ton. So this is calculated per ton. और कार्बन फुटप्रिंट की अगर बात करें, दिस इज अ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? सो दिस इंक्लूड प्राइमरली द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स. और ये इस तरह से चीजें भी मेजर करती है, लाइक द टन ऑफ द CO2 दैट इज इमिटेड पर ईयर, the number can be supplemented by the ton of CO2 equivalent to the gases, right? So this is a proportion how it's actually work, and these include methane, nitrous oxide and other greenhouse gases. तो ये जो important point है इसको आप देख ले. This is relevant for the prelims examination. Now effects of higher carbon footprints. अगर बात करें कार्बन फुटप्रिंट की अगर लेवल पड़ती है तो how it can have an impact on the globe. So climate change is an ultimate effect of the carbon footprint. If you're having a large number of and the excess number of carbon footprint, definitely it is going to impact the climate. And greenhouse gases, whether it is natural or human produced, can contribute to the warming of the planet. So जो planet की warming है, खास करके global warming जो है, एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है carbon footprint का. Now from 1990 to 2005, carbon dioxide emission has increased by 31%. So this is again an important point, a fodder point for the mains examination. Mains में इस तरह के points आप बिल्कुल लिख सकते हैं. Now by 2008, the emission has contributed to 35% increase in the radioactive warming, अगर radiative mark करें, and earth energy balancing towards the over level of 1990.
और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMA को मुताबिक अगर आप चलेंगे, सो दे रिकॉर्ड लाइक फॉर 2021-2020 द वार्मेस्ट डिके ऑन द रिकॉर्ड वाज द लॉन्ग क्लाइमेट ट्रेंड दैट इज गोइंग, राइट. सो दिस डिके, द प्रेजेंट डिके जो अभी हमने एक साल पहले की बात कर रहा हूँ 2011-2020, दिस वाज द वार्मेस्ट डिके from when we are recording the temperatures. Now the second news or the topic, production link initiatives PLI scheme for the pharma and the IT sector, and important initiatives for boosting the make in India initiatives in pharma sector as well as in the IT sector. So Union Cabinet has recently approved the production linked initiative scheme for the pharmaceutical and the IT hardware sectors. और ये जो टोटल आउटले रखी गई है दोनों के लिए, फॉर फार्मास्यूटिकल इट इज 15,000 करोड़ रुपीस एंड फॉर द IT सेक्टर दिस इज 7,350 करोड़ रुपीस. नाउ एडवांटेजेस क्या क्या होंगे PLI स्कीम के, अगर स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल, सो ये जो स्कीम बनाई गई है दिस वुड बी देयर फॉर द 9 ईयर, सो द टाइम लाइन इज टिल 2029, from 2021 till 2029 is a timeline, right. और ये बेनिफिट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, एंड इट विल अगेन क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लोगों को मिलेगी, एंड एट द सेम टाइम इट विल प्रोवाइड द अफेबिलिटी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन टू द कंज्यूमर ऑफ द कंट्री. एंड स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी भी स्कोप बढ़ जाएगी, एंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू समवेयर क्लोज टू 15,000 करोड़ रुपीस. Now the scheme is expected to promote the production of high value products in the country and increase the value addition in export. Again, as you know, India is a country which has a very good position in terms of the vaccine manufacturing. तो हमारी जो export capabilities है वो भी बहुत हद तक increase होगी इससे. Now, how it is going to impact our IT and hardware sector? Definitely, it has a positive aspect on that. तो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है दिस इज फॉर 4 ईयर, इसकी जो ड्यूरेशन होगी दिस इज फॉर 4 ईयर, और द स्कीम विल गिव इंसेंटिव एंड इंक्रीमेंटल सेल्स टू द गुड मैन्युफैक्चरिंग्स. It will benefit 5 major players and 10 domestic companies in the IT sector. तो कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं they would be definitely benefiting. और ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट की जाएगी अंदर आत्मनिर्भर भारत, एंड दिस विल हैज अ ह्यूज इंपोर्ट रिलायंस ऑन द आइटम एट द प्रेजेंट. अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जितनी भी चीज़ें होती हैं IT से रिलेटेड, IT के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, दैट इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, राइट. सो वी वेर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन चाइना, बट कंसिडरिंग द फैक्ट इंडिया की ये कोशिश है दैट वी शुड बी सेल्फ रिलायंस, इसी कंसर्न में द PLI वुड बी गिवन एन एज टू दैट. Now it will also enhance the development of electronic ecosystem in the country, right. So through this initiative government is trying to make India an electronic hub and an ecosystem. Now the center said that the scheme would generate more than 180,000 jobs, that would be for like basically indirect and direct jobs that would be created in past 4 years, the coming 4 years. So for this would be by 2025, right. तो ये 4 साल के लिए जो फार्मास्यूटिकल की है वो 9 years के लिए. Now creation of direct jobs. So the job in the sector is expected to add 20,000 direct job, 80,000 indirect jobs जो हैं वो generate होंगे. The scheme is also aimed to create a global champion for India that would have a potential to grow in size and scaling up their cutting edge technology, thereby penetrating the global value chains, right. So this is something, the advantage of the pharma sector and the IT sector that is coming through the PLI. Now, Geospatial data policy liberalized. This is again one of the significant steps taken by the government of India. Now, the government has recently announced कि वो जो norms है Geospatial data को उसमें liberalization करेगी, so that there can be acquisition and productions of data with the geospatials. Now, this move will also help to boost the innovation sectors, खास करके creating a level playing field for the public-private entities. As you know, गवर्नमेंट ने अभी तक स्पेस सेक्टर में FDI अलाउ नहीं किया था, फॉरेन कंपनीज अलाउ नहीं थी, बट दे हैव अलाउड दिस इन द स्पेस सेक्टर एज वेल, राइट. सो दिस इज समथिंग इन लाइन ऑफ दैट. और प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो सेड कि दे वुड बी लिबरलाइजिंग द पॉलिसीज फॉर द एक्विजिशंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ जियोस्पेशियल डेटा, जहाँ पे एक मैसिव स्टेप्स लिया गया है अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Now, what is the new guideline? How this is going to change from the previous one? Now, under the new guideline, the sector would be deregulated. यहाँ पे deregulation की जा रही है, deregulation या decentralization, but more appropriate word would be deregulation in such aspects जहाँ पे surveying,
First is surveying, second is mapping, and third is building application can be based and done on the away. Now, the other sector that India would be going to have benefit by the deregulation is that no prior approval would be required, right? इसमें कोई prior approval की जरूरत नहीं पड़ेगी. Even the security clearances and license for the acquisitions and production of geospatial data and geodata services, including the map. So this is completely just you have to intimate the authorities. You don't need to have the NOC to access the data. So government is trying to liberalize this, deregulate it so that it can be further used for the research activities and other public-private partnership agreement. Now, क्या advantages होंगे? So definitely this is going to benefits the country, farmers, startup, the private sectors, the public sector, the research institutions, and drive the innovation and build suitable solutions. उसके अलावा it will have an easing norms for greatly helping in the sector that were suffering because of the non-availability of high quality maps. तो जहाँ पे high quality maps access नहीं थे research activities में या जिस जगह पे भी इस तरह की vacuum बनी हुई थी, they would be filled. Now this move would also have unlocked the tremendous opportunities. खास करके नए startups की बात करें, private sectors की बात करें, public sectors की बात करें, they would be given a scalable solutions. Now it would also create an employment and accelerate the economic growth in the country. Now the other news, that is SanDisk, the government instant messaging app. So in line of basically WhatsApp, उसी तरह के सेम पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट ने अपना एक गवर्नमेंट मैसेजिंग ऐप निकाला, दैट इज नोन एज SanDisk. So the National Informatics Centers has launched the instant messaging platform called SanDisk in lines of WhatsApp. और ये NIC जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है. सो मेक श्योर आप इस तरह के जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको याद रखें. And what it will be doing, it will be providing a backbone for the e-governance, and definitely it will going to promote the benefit to the central government, the state government, and the UT administration. And the launch of the app is a part of government strategy to push and use India-made software to build an ecosystem for indigenously developed products. तो इंडिया में खास करके वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड सेल्फ रिलायंस इन इंडिया, चाहे वो डिजिटल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी सेक्टर्स में हो, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो. इंडिया इज ट्राइंग टू इंश्योर कि हर जगह सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हो. Now about the SanDisk app, as you know, this is an instant government messaging app that can be used for official and casual use for any government employees or public users having a valid mobile ID or email ID, right? तो mobile numbers हो, email ID हो, तो आप उसे register कर सकते हैं. And it offer features such as making group, broadcasting messages, the forwarding messages and emojis. That is same in line of the WhatsApp. जिस तरह से WhatsApp काम करती है, same parameter पे ये काम करेगी. And the user will have to deregister to as a new user in case of if they wish to register email ID or change the phone, right? In case अगर वो दोबारा से करना चाहते हैं तो they can also do that. And it has also the messages as confidential, privacy issues को ध्यान में रखते हुए they would be taking care of everything, right? Now privacy concern है यहाँ पे basically इंडिया की जो computer emergency response team है and they work under the Ministry of Home Affairs. They have issued an advisory to all government employees to avoid using the Zoom and official communication for safety and privacy concern. So because of the lockdown, Zoom was something that was there in the government arena also. The government of India has also used access to the Zoom. But कुछ प्राइवेसी इशूज को लेकर के, सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के गवर्नमेंट ने Zoom को भी मना कर दिया यूज करने से. Now they would be using their own app, right? Now, State of Environment Report 2021. This is again one of the significant report. This is very important for the prelims examination as well. यहाँ से prelims में भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे. Recently, the State of the Economy report that was being released by the Center for Science and Environment, so known as CSE. और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एडवोकेटरी है जो कि बेस्ड है न्यू दिल्ली में. दे आर वर्किंग ग्रेट फॉर द टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस. खास करके अगर बात करें जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है EIA को लेकर के, या फिर जितने भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड खास करके NGO के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सेंटर है दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट. Now finding the report, India is set to usher the pandemic generation जहाँ पे 375 million children जो हैं they are likely to suffer with the long impact. So यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर के जो इम्पैक्ट हुई है लॉकडाउन की, even they have increased the child mortality
लॉसेस टू एजुकेशन एंड वन प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. And over 500 million children have forced to go out globally, or India accounted for more than half of them, right? So most of the children has lost their school. They are not again in the situation that they can rejoin it. And COVID-19 has make worlds poorer. जो पूरे विश्व में जिस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी थी वो काफ़ी कम हो चुकी है, राइट. नाउ इंडिया एयर की अगर बात करें, so the water land has become more pollutant basically, and India is ranked 117 192 in terms of sustainable development, and now behind all South Asian nations and Pakistan, right. Now state performance in sustainable development goal. So the best performers were Kerala, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana, and the worst performer were Bihar, Jharkhand, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Uttar Pradesh. So these were the worst performers. So आपको नाम याद रखना है हर स्टेट्स के, ताकि अकॉर्डिंगली अगर एग्जाम्स में आए तो आप करेक्ट मार्क कर सकें. Now coming to the other news, that is National Hydrogen Energy Mission. This is another important topic that was there in the entire fortnight. So let's see what are the details. So the Union Budget, that is 2021-2022, has announced for the National Hydrogen Energy Mission. और ये जो मिशन है that aims to draw a roadmap for using hydrogen as an energy sources, right? तो एक क्लीन एनर्जी की तरफ इंडिया बढ़ना चाहती है, और जो हमारी खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो एडहेरेंस है, जो क्लॉजेज हैं, उनको फुलफिल करने के लिए दिस वुड बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ NHM, that is National Hydrogen Mission, this will capitalize one of the most abundant element of the earth. हाइड्रोजन की अगर बात करें बहुत ही अबंडेंस में अवेलेबल है. दिस इज अ क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन, राइट. दिस वुड बी अ क्लीन alternative fuel options. Now talking about the mission would focuses on generation of hydrogen from the green power sources. तो अगर बात करें green power sources की, तो वहाँ पे hydrogen become a very significant, and it aims to link India's growing renewable capacity with hydrogen economy. पूरी ambition की बात करें total, so India ambition is like 175 gigawatts by 2022. और ये फर्दर दिस वुड हैव अ allocation of corpus of around 1500 crore rupees. And the uses of hydrogen would not only help India in achieving the emission goal under the Paris Agreement, but also reduce the import dependency on the fuels. Now, what is hydrogen? बात करें अगर हाइड्रोजन की, so getting at chemical properties, so hydrogen is the lightest and first element in the periodic table. And since the weight hydrogen is less than air and it rises in the atmosphere and is therefore rarely found in the pure form, right? और हाइड्रोजन फ्यूल की अगर बात करें तो जीरो एमिशन फ्यूल है ये, that is burned with oxygen, and it can be used in fuel cell or internal combustion engines, and it is used as a fuel for spacecraft propulsions, right? So this is the advantages and what a basic of hydrogen you must know. Now इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करें, इंडिया हैज अ ह्यूज एज एन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शंस की अगर बात करें, वहाँ पे दिस इज अ ह्यूज पोटेंशियल, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पेटस ऑन स्केलिंग द पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्रीज. और अगर एडिशनल कैपेसिटी की बात करें, सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हैव अ रिन्यूएबल पावर जनरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन प्रोडक्शंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, एंड इंडिया कैन बिकम अ कॉस्ट इफेक्टिव, राइट. जहाँ पे अगर गारंटी की जाए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन अल्टरनेटिव कैन इंश्योर अ सेल्फ सफिशिएंसी एंड एट द सेम टाइम इट कैन गारंटी द एनर्जी सिक्योरिटी टू इंडिया. Draft blue economy policy, again a significant policy that is important. So recently the Ministry of Earth and Sciences, the name of the ministry is important, make sure you know this, has rolled out the draft blue economy policy, which has given the suggestions from the various stakeholders, and it is in line with the government of India new vision policy, but that is 2030 बेसिकली. तो जो नई इंडिया जो विजन है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कंट्रीब्यूट करें आप या फिर कंसिडर करें तो दैट इज ब्लू इकोनॉमी, राइट. ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी. Now, what is all about this draft? So the policy document highlights the blue economy as one of the 10 core dimensions of the national growth, 10 core dimensions of the national growth, and it emphasizes across the several key sectors to achieve the holistic growth. तो जितने भी 10 core sectors dimension है उसमें एक single important dimension में blue draft economy भी आती है. Now it recognizes the following 7 thematic portions. They have other 7 thematic portions. I'm not getting into details of that, but you can further read on the draft.
नाउ एरिया ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें, सो नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर द ब्लू इकोनॉमी, फिर है कोस्टल मराइन स्पेशल प्लानिंग फॉर टूरिज्म, मराइन फिशरीज एंड एक्वेटिक फिशरीज, आप देख सकते हो ये सारी 7 पॉइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड, सर्विसेज एंड स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग इंक्लूडिंग एंड ट्रांजिशंस, coastal and deep seeking mining and offshore energy, and security, strategic dimension, internal engagement. So ये 7 areas हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, right? This was the 7 thematic areas. तो ये 7 thematic areas ये हैं area of developments. So what is the aim of this policy? It aims to enhance the blue economy. खास करके इंडिया के जो overall GDP है वहाँ पे बहुत हद तक मदद मिलेगी. And the blue economy, which consists of economic activities, depends on marine resources, comprise of 4.1 Indian economy, and it improves lives of the coastal community, preserve marine biodiversity, and maintain the national security for marine area and resources. Right now, global step की अगर बात करें तो जो SDG के goal 14 है उसमें this is clearly mentioned that it seeks to conserve the sustainable use of ocean, seas and marine resources for sustainable development. So if you're writing essay paper and if you're writing in mains paper, तो इस तरह के points आप वहाँ पे बिल्कुल use कर सकते हैं. This will give a significant point. India-China Hotline. Recently, India and China have developed a new hotline. So this hotline is meant to have a direct telephone lines in a constant operational readiness as to facilitate the immediate communications. तो जो immediate communications करनी है उसमें ये बहुत हद तक मदद करेगी. And the hotline were helpful in timely communication and exchange of views between the two countries. Now what is India's stand on this? अगर बात करें, इंडिया ने पहले भी reiterate किया था 3 mutuals को, that is first is mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest as an appropriate to the relationship. And disengagement की बात करें, this was followed by de-escalation that would lead to peace and long line of actual control and eventually led to normalization of ties. Now what is China's stand on this? अगर बात करें boundary situation की, which already we have seen, जहाँ पे बहुत सारी problems देखने को मिली है, and the indication was from the two sides that should return to the business as usual and issues were dealt with. बहुत सारे progress हुए हैं इस बीच में. What was the recent development? अगर बात करें, China and India has forced clashes in Nathula and Sikkim. उसके बाद China and India have armed. They were in the standoff in the Pongso, जो कि गलवान वैली में वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी. थर्ड इज इंडिया बैंडेड 59 एप्स फॉर चाइना, जो भी चाइनीज ऐप थे उनको बैंड किया गया था. एंड इंडिया ब्लॉक्ड 43 मोबाइल एप्स, दे वर मोस्टली द चाइनीज. सो रैटिली जो कर बात करें रिटेलिएशंस की, तो उसमें इंडिया ने इस तरह के स्टेप्स लिए थे. एंड इंडिया बैंडेड द इन्फोर्समेंट ऑफ अंडर सेक्शन 69 है, जो IT एक्ट है, इन्फॉर्मेशन एक्ट है. इस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट. तो मेक श्योर आप फिर से इसको देख लें. कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थीम रिपीट्स होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं. सो इंडिया एंड चाइना डिसाइडेड टू फाइनली रीच एन एग्रीमेंट ऑन द डिसएंगेजमेंट एट द पोंग्सो लेक. क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है? ये इम्पेरेटिव है कि दोनों साइड्स एक win-win situation की तरफ आगे बढ़े. They should keep consultation the momentum and further ease the situation in improving the border management. And India and China also need to advance the boundary talks to build up the mutual trust and realize peace, tranquility, and in the border areas especially. Now, intensified mission in Dhanush 3.0. So, how this mission in Dhanush is going to utilize in terms of vaccination the people, because COVID-19 के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे, because of the lockdown, the children of the age group, they were not able to get vaccinations. तो उसको रीस्टार्ट किया गया है, इंटेंसिफाई किया गया है, इस प्रोग्राम को फिर से रोल आउट किया गया है, where pregnant women and children would be given the immunization, right? Now बात करें अगर इस intensified missions in Dhanush 3.0 की, so this mission aims to reach the population that is available. Universal immunization program को coverage करेगी. And at the same time, children and pregnant women, they would be covered under this. इन दोनों को coverage दी जाएगी. And it will help 2 rounds for this year. First is like conducted in 250 pre-identified districts और 29 states में. तो ऐसे 250 districts को identify किया गया इंडिया में, जो कि accordingly उनको immunization provide की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से. And the district that has been classified, उसमें कुछ important district को classify की गई है. 313 district has low risk, 152 district have medium risk, and 250 district have high risk. Now what is immunization program? Universal जो UIP वो क्या है? UIP इंडिया में 1978 में स्टैंड की गई थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. Now it has expanded further
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है उसको लाया गया था. एंड इन 1985 द प्रोग्राम वाज मॉडिफाइड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे प्रोग्राम की? फर्स्ट इज रैपिडली इंक्रीजिंग द इम्यूनाइजेशन कवरेज, improving the quality of services, establishing a reliable cold chain system to health facility level, introducing the district-wise system for monitoring and performance, or last है to achieve self-sufficiency in the vaccine productions. So these were some of the core and main objective of the vaccination process. Now, corruption perception index 2020. So as you know, index is again very important for the prelims examination. तो इस तरह के जो इंडेक्स है वो आपके एग्जाम्स के लिए भी और खास करके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रेलिवेंट है. नाउ इंडिया रैंक हैज स्लिप्ड 6 पोजीशंस फ्रॉम 180 कंट्रीज में. जो टोटल रैंकिंग है वो इंडिया की रैंकिंग 86 है. नाउ 2021 की भी इंडेक्स आ चुकी है वेयर वी हैव मूव टू 81, राइट. सो दिस इज फॉर दैट एंड द रैंक ऑफ 80 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2019. और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज फाउंडेड इन 1993, जिसकी हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में. एंड इट टेक्स एक्शन टू कॉम्बैट द ग्लोबल करप्शन विद द सिविल सोसाइटी, एंटी करप्शन मेजर्स, और इसमें किस तरह से जो क्राइम्स है उसको प्रिवेंट किया जा सके, करप्शन एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जा सके. एंड द मोस्ट नोटेबल पब्लिकेशंस इंक्लूड द ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, एक तो ये, और दूसरी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको CPI के नाम से भी जाना जाता है. सो देयर इज टू, दैट इज GCB ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, अनदर इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. नाउ व्हाट अबाउट दिस इंडेक्स? दिस इंडेक्स लाइक 180 कंट्रीज को ये रेट करते हैं उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली. एंड देयर आर 2 क्राइटेरिया दैट यूजेस द स्केल 0 to 100, 0 being highly corrupt and 100 being the cleanest one. और जो CPI 2020 है that gives the picture कि कौन से कंट्री की क्या परफॉर्मेंस रही है in tackling the corruptions. And more than 2/3 of the country were just below 50 with an average of just 43. Now अगर बात करें पुअर परफॉर्मर की, तो साउथ सुडान with the poor performer, Somalia at the bottom with a score of 12, followed by Syria, Yemen and Venezuela. Now in terms of top performer, the top performer in this CPI was Denmark and New Zealand. So these two countries are among the top 2 that score have 88, followed by Finland, Singapore, Sweden, Switzerland, right? So these are the countries which are top performers and these are the worst performers. Talking about India specifically, so in 2020 India scored 40, it was 41 in 2019. और इंडिया ने एक्सपीरियंस किया कि जो स्लो प्रोग्रेस है इन एंटी करप्शन एफर्ट्स विद सेवरल गवर्नमेंट कमिटीज दैट वे देयर, इंडिया के जो अपने कमिटमेंट्स है रिफॉर्म को लेकर के, दैट इज मैनेटलाइजिंग इफेक्टिवली. और जो करप्शन के शिफ्ट्स है दैट इज पब्लिक स्पेंडिंग अवे फ्रॉम द एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज. कंट्री को ये ज़रूरत है कि जो लेवल ऑफ करप्शन है उनको कम किया जाए रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेंड टू स्पेंड ऑन द हेल्थ, राइट. So this was all about the India specific concern with regard to CPI, and we have almost covered 10 topics that was relevant in this entire fortnight. और रिकमेंडेशंस की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस में मैं आपको बता दूं जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है. सो स्ट्रेंथनिंग द ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर द रिसोर्सेस, इंश्योर ओपन ट्रांसपेरेंसी कॉन्ट्रडिक्शंस टू कॉम्बैट द रॉन्ग डूइंग, डिफेंस करना डेमोक्रेसी को किस तरह से डिफेंड किया जा सकता है, सिविल स्पेस में सिविल सोसाइटी को एक मीडिया में खास करके एक पीयर ग्रुप के तरह अकाउंटेबिलिटी के साथ सेट करना, और पब्लिशिंग रेलेवेंट डेटा टू गारंटी द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशंस जो पब्लिक रिसीव कर सकती है इन टाइम बाउंड मैनर, एंड द ग्रीवांस रिड्रेसल इज अगेन विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफेक्टिवली टाइम बाउंड मैनर, ट्रांसपेरेंसी with accountability is the need of the hour. So this was all about the Fortnight 2. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe APTI PLUS Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.